All right, everybody, good evening and welcome to the second session of our Let's Hatch It Out series titled Fintech, a Game Changer for Financial Inclusion. Can I do a quick sound check? Can the audience please write in the chat if they can hear me clearly? Gee, I can hear you. Okay, great. Likewise, yes. Great. So without further ado, I'm going to get us started today. Today, we're joined by our esteemed panelists and industry experts who will be sharing their knowledge with us. So without further ado, let me introduce, to start off with, Badr Khushnu. Badr is the co-founder of Fishery.com, an e-commerce platform empowering hundreds of popular B2C retail brands, SMEs, and artisans across Pakistan. Badr has also co-founded Bremers in 2006 and has consulted for Google, Facebook, and Twitter as their first person on the ground in Pakistan. He currently also serves as an executive in residence at SVSB's TMA program at LUMS, and he's the founding board member and mentor at several startup incubators and accelerators. He's currently also serving as Chairman Pasha, and he brings along with him 20 years of rich and diverse experience, having built strong foundations with organizations like SMEDA and Nishat Textiles. So welcome, Badr. Moving forward, we have Zishan Qureshi. Zishan is an experienced growth strategist with over 18 years of experience in marketing, sales, and product management from across the telecommunications, electronics, and IT industries value chain. He can handle multi-million-dollar businesses and in-depth knowledge and understanding of MEA and Pakistan device market dynamics, consumer behavior, and the trend of marketing and sales channels. Previously, he has worked for companies including Samsung, Haier, Peshawar Zalmi, and Q Mobile. Currently, he's the founder of Extent, a fintech BNPL company focused on improving consumers' lives by delivering transparent and honest financial products. He's also the chief executive of Deploy Private Limited, which is an emerging mobile phone manufacturer and distributor, as well as an advisory board member of Corporate Impact. Last but not the least, we have Nadeem Sheikh. Nadeem is a recognized voice in the digital financial services industry. Over the last 25 years, he has held many senior executive roles in the financial services industry globally, and he has co-founded organizations including Anthemis, which is one of the first early stage venture capitalists and advisory firms dedicated to fintech, The Future Farm, which is a global firm dedicated to bringing mental health into the world of entrepreneurs, and Neem Exponential, which is focused on building an open banking platform to provide financial wellness to millions of underbanked consumers and small businesses in Pakistan specifically. He has held numerous non-executive positions and gives his time to impact-driven businesses, including Care Pakistan and Access Up. So thank you so much to all of our panelists. I know this is a long introduction, but let me tell you, I tried to make it as brief as possible. So Badr, Zishan, Nadeem, if you could just turn on your videos, we can dive straight into the conversation. It's great having you all here on such short notice. I think I need permission. I think it says I can't start. Yeah, same here. Okay. You should be able to. Let me try now. Yeah. Does it work? Yep. Thank you. Great. All right. So I apologize for taking so much of your time, but I try to do justice to all of your extensive, biographies. So I'm going to start and dive right deep in. So without keeping our audience waiting anymore, what do we plan today? And to give a bit of background about why we've chosen this topic specifically. So our first topic was Where Are the Women, where we talked about
women in the startup sector. And this time we're talking specifically about the fintech ecosystem of Pakistan. So Hatch was founded with the vision of empowering you for a better tomorrow. And that in large also means empowering, Pakistan overall. And to make that a reality, we need, things like good policies in place and a good economic activity going around. For that, which requires, of course, access to resources and institutions to be granted to everybody. So, we're trying to create an inclusive society in which we believe that financial inclusion is really the foundation to make that a reality and to achieve that economic growth, which we all want to do collectively as a nation, as well as uplift the poor and the marginalized. So just to give a bit more background, in terms of where we are in the statistics, they say that right now Pakistan is around only 21% of Pakistan's population is financially included. And while this is a 7% jump from where we were in 2017 compared to where the rest of the world is, specifically the lower and middle economic nations, they're still at around 33%. So there's a stark difference in terms of where they are and where we are. In terms of our mobile connections, we have over 172 million mobile connections in Pakistan, a lot of mobile active users as well. But we're still, as a nation, not doing as well as we can. So with that, I'll start with Badr, and then I'll ask Nadeem and Zishan to pitch in as well. Badr, where do you see us right now, and why do you think that irrespective of however much efforts are being done by banks and financial institutions, we see initiatives such as State Bank's RAS initiative, which recently came out, but we're still not really doing as well as we could. So what are those reasons? What are those gaps? If you could really just shed some light on those, and then we'll take the conversation from there. Gee, thank you so much, Mashal. I think, and thank you for the introductions. It's a challenging opportunity, but I hope bilingual is okay. Otherwise, I'm happy to, if the audience is mostly Pakistani, I think that would be better. So मेरे ख्याल में देखिए बड़ा सिंपल सा चैलेंज है. अगर आप देखें इंटरनेट को, तो इंटरनेट की हिस्ट्री पाकिस्तान में देखें तो we started with we were early in 2G deployment in the world. When we deployed GSM, the world was on CDMA, or we were early for the market in that sense. But then we got delayed on 3G, or we actually missed the 3G global boat, because by the time 3G हमने licensing की तो दुनिया 4G पे जा चुकी थी. And the moment we got onto 4G, as we speak, we have about 110 million broadband users over the mobile. And that's a huge number. I mean, if you put that in context, Singapore's population is about 5 million or even less. So we have 110 million people connected to 4G who are paying for 4G connectivity. अब उसमें different segments हैं with their different usage, वो of course एक separate case है. Whereas अगर आप banking की side पे देखें, जो banked economy है, जो भी आपने बात की financially included है, वो हम marginally कभी 1%, 2% ऊपर जाते हैं, but I mean we're round about there. How even though we have all these mobile wallets, तो हमारे पास different opportunities हैं for people to be included in the financial network in some way. So mobile wallets भी हैं from the Jazz Cash and the Easy Paisas of the world से लेके normal banking accounts हैं या credit cards and debit cards हैं. Actually, unfortunately, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में credit cards की penetration is less than 1% of the population. Debit cards are around 10 to 15%. So mobile wallets के बावजूद ये भी हम penetration grow नहीं कर पा रहे हैं. My observation there, and especially from the lens of e-commerce perspective, even though अगर आप देखें e-commerce भी, by the way, pre-COVID we were far below. We were at less than $1 billion a year e-commerce. इस वक्त last 4 quarters की जो domestic e-commerce की transactions हैं पाकिस्तान की, वो $4 billion cross कर गई. So we are significantly growing rapidly, both in terms of connectivity, in terms of commerce over the internet, but banking की जो adoption है, digital banking खासतौर पे या even otherwise, वो grow नहीं कर पा रही है. And my personal observation, there are 2 reasons for that. One is a religious perspective. बहुत सारे लोगों का ये context आ जाता है कि ये इसमें interest है, हलाल हराम का मसला है या नहीं है, या उनको clarity नहीं है. अगर Islamic banking है तो कहते हैं आपने उसी कान को दूसरी तरफ से आके पकड़ लिया है. So वहाँ communication हो सकती है, वहाँ कोई भी error हो सकता है policy के कुछ भी, but पहली चीज़ ये perception का issue है कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि इस पे, आई थिंक स्पेशली
देखें KLI से बाहर निकल के अगर आप देखें, बाय द वे जो हम 21% ले रहे हैं, आपने कोट किया बैंक इकोनॉमी, इसमें ये यूनिक नहीं है, हम इसमें नेट की बात नहीं कर रहे, ग्रॉस की बात हो रही है। तो मेरे अगर 4 बैंक अकाउंट हैं या 3 क्रेडिट कार्ड हैं, तो मेरे आई एम इंक्लूडेड 7 times in that 21%. So that's another challenge. We don't have visibility to the unique active accounts, चाहे वो मोबाइल वॉलेट्स हैं या बैंकिंग अकाउंट्स हैं, चेकिंग या कुछ भी सेविंग्स के, वो कितने हैं एक्चुअली। सो दैट्स अनदर चैलेंज। बट एक तो मेरे हिसाब से रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट का इशू है कि लोगों में परसेप्शन का इशू है। दूसरा जो बिगर चैलेंज है इज एक्चुअली, एंड इन ऑल ऑनेस्टी, इज द टैक्स इशू. Majority small businesses and micro entrepreneurs and individuals think that the moment we start banking, the tax people are going to come and harass us, and we have precedents for that. We know this is happening. तो ये भी एक दूसरा चैलेंज है। ये दो बड़े challenges हैं which inhibit people proactively moving on to a digital platform or putting their money somewhere into a banking channel. एक ये है। तीसरा एक और भी challenge है, which is जिन लोगों ने एक्सपोर्ट में या बाहर कोई काम करना है जो कि वो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते, तो अगर वो पाकिस्तानी बैंक से बाहर पैसे भेजने की कोशिश करते हैं तो स्टेट बैंक डज नॉट अलाउ दैट। मेरा पैसा, मेरी अर्निंग, मेरे प्रॉफिट या जो भी बैंक में है, अगर मैं आज स्टेट बैंक को कहूँ कि मैंने बाहर एक बिजनेस करना है, आई वांट टू पुट दैट मनी आउट, $100,000 or $50,000, आई एम नॉट गिवन अ परमिशन, एंड आई एम ओनली अलाउड कि मैं सिर्फ अपने मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए और शायद कोई एक और 3 रीजन है जिनके लिए मैं बाहर पैसे भेज सकता हूँ, उसके लिए भी मेरे पास पहले इनवॉइस होनी है और वो सब जरूरी है। अब जब ये वो लीगली मैं अपना पैसा बाहर नहीं भेज सकता, तो फिर बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं बाहर किसी तरह कोई काम करूं या किसी को भेजूं, तो देन दे यूज अनऑफिशियल जो मीन्स हैं टू सेंड मनी आउट। अगर उन्हें बाहर अनऑफिशियली भेजना है तो दे नीड टू हैव अनऑफिशियल कैश विद देम which they convert unofficially and then they send out unofficially through Hundi channels and other ways. And hence, that's another reason people don't want to document. So these 3 mere subs observations hain, and I'll let other panelists share their thoughts, but these are my 3 observations. Thank you so much, Badr, for that detailed answer. Nadeem, I'd like your input on this, and then we'll move on to Tishan. Yeah, look, I have a slightly different perspective. Not that I disagree with what Badr said. There's a lot of things that have to come together to make this happen, right? And with, you observe this market after market, having spent time and worked in all kinds of markets around the world, you have to have, firstly, there has to be a consumer demand, right? The population has to be there for needs of product, right? There has to be the right kind of regulatory environment to enable that to happen. There has to be the right kind of 3G, 4G penetration that is a big piece of it, right? They have to be entrepreneurs willing to do this, right? There is no incentive for any banks anywhere in the world to disrupt their business models until someone comes in and says, we're going to disrupt it for you. And then you have to have talent and, entrepreneurial talent to be able to build these businesses and build these products and so on. And then most importantly, you have to have capital. Right? Capital of all kind of forms, people who are willing to take risk early stage, people willing to take risk later stage, people who understand this stuff. Is not just people willing to invest in, nice models that work. It's like taking chances with the models that are on the riskier edge, right? An edge of this thing, right? So ye hamare yahan ho raha hai, right? That's what happened over the last 3 years. Some prior to COVID, some before because of COVID. All those elements are coming together, right? The issue is not that. I think the issue of taxes and people avoiding taxes, those are surface level issues. I think the real issue is that most of the products are poor, right? Most of the mainstream banks don't lend. They don't provide. It doesn't matter about interest rate or non-interest rate. The 2 of the largest banks just simply do not lend to a consumer, right? So who cares about interest rate? That's a secondary issue, right? Interest rate hoga nahi hoga, right? So where we are is fundamentally we provide payments rails, and institution after institution, even the telco businesses that have done this and so on, is full of friction, right? It's more expensive to put cash into account and take it out than to use cash, right? So why am I going to give up, especially for the underbanked or unbanked? It's going to be more expensive for me to use the banking system. Why would I do that?
right? I cannot get an insurance product. I can get a generic life insurance product. I don't need a generic life insurance product. I need a product that helps me figure out as a farmer whether the rainfall is certain dimensions. Can I get insurance for that? Is the heat of certain level for the crop? Can I get insurance for that? If I'm doing some household insurance, can I get that? If I need fire insurance for my micro SME, can I get for my shop a fire insurance, right? Those are things that matter, right? So what you're seeing now is, I think there's a significant shift. I've been in Pakistan now for 4 years, present here as part of my, firstly with my JazzCash job role as a CEO, and then now building Neem Exponential. I've never seen a more progressive environment where things are happening, right? We are very good to blame our governments and so on, but Pakistan's COVID response, which is mostly a digital response, has been identified one of the best in the world by far, right? In terms of how we manage the economy. And that's a huge thing because the underlying stuff is starting to work. People are digitizing in all kinds of sectors, whether it's micro SME, whether it's e-commerce, whether we have the third largest freelance market now, third largest freelance market in the world, right? So all this stuff is coming together. So I think this is where we've seen it. Like, look, I give you a proxy. I've spent a lot of time in the UK. There are, close to 900 financial institutions of different kinds in the UK, right? 900 financial institutions. In the last 5 years, there have been an influx of digital banks coming in, 50 of them, including people like Starling and Monzo and Revolut and all kinds of stuff, and all kinds of other financial institutions in BNPL and so on. And they're all worth $1 billion. They all have customers. So that means even in that market, the services have been poor, that newcomers can do this, right? So I think we have seen nothing yet. Fintech, I was one of the pioneers of, one of the first funds that set up in Fintech in 2010. It's like really Fintech in the UK took off in 2014, 2015. So this is 6 years in the making. We are 2 years in the making. What's happened in Fintech in Pakistan is 2 years roughly, right? I mean, everyone claims to be now part of Fintech, right? And they go back, oh my God, I was part of Fintech 20 years ago. There was no such thing, right? There was no such thing called Fintech until 2015, right? So this is recent phenomena. And I think what we're seeing in Pakistan is tremendous opportunity. Absolutely. And with that opportunity, I know Zishan is one person who's also availing that with Extend. So Zishan, what are your thoughts? I would agree with Nadeem that what he said is the enabling environment has started. Actually, a lot of progress has been done in last couple of years, which was not there. जिस तरह इन्होंने बात की कि banks are not they are not simply lending people money who need basically money. उसकी वजह क्या है? देखें, दो चीजें हैं. एक तो ये कि enabling environment में हम एक चीज ये बात करते हैं, product available है, मगर उस product को use करने के लिए masses के पास क्या mean है? We are having a consumption of 3 million new handsets every month. So it means 36 to 40 million mobile phones. But out of that, 60% still are 2G phones, which cannot use as उसमें कोई application use नहीं हो सकता. It's a simple brick phone or a bar phone. So it means 60% people, अगर आप कहते हैं कि 4G penetration is 172 million, still they don't have the device to utilize any financial service. How will they do that? And basically, those are the people who need to be included. They're not people in KLI, but in tier 2, tier 3, tier 4 cities. पहली चीज तो ये है कि उसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि जो स्मार्टफोन का जो because that is the way they can use some service, fintech or any application or product what Nadeem was talking about. So I think one is main issue is that. The second is I think the credit rating score और कोई भी ऐसी चीज पाकिस्तान में पहले अवेलेबल नहीं थी जिसकी बेसिस के ऊपर आप इंस्टेंटेनियस कुछ डिसीजन ले सकें. अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह तस्दीक अवेलेबल है. यू कैन पुट द CNIC एंड देन दे इंस्टेंटेनियसली टेल के जी 52 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ दे आर रजिस्टर्ड एंड दे आर गैदरिंग डेटा. देयर वाज नो रिपोजिटरी अवेलेबल. सो आई बिलीव द एनवायरनमेंट इज काइंड ऑफ it's kind of how can I say कि जो एक फर्स्ट लेवल environment या एक surface या हमें एक फाउंडेशन चाहिए था फिनटेक को ग्रो करने के लिए, वो अब आहिस्ता आहिस्ता बनता चला जा रहा है. वॉलेट्स अवेलेबल हैं, आप बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं. नाउ BNPL फिनटेक्स लाइक किस्तपे एंड कलपे आर कमिंग इन. they are trying to lend people money on the basis of just instantaneously. Banks की तरह नहीं है कि बहुत intimidating process है, but still I think a long way to go.
लेकिन enabling environment जो है is there, but still I think it will take a lot of time to be there, maybe 2-3 years more. Yeah, I agree. Absolutely. So now taking the conversation a bit towards what the startup ecosystem can do to kind of bridge these gaps. So we've already talked about the enabling environment is zarurat hai, and certain key actors are trying to create that. So but in the past few years we've also seen an exponential rise in fintech. Deep was saying that now everybody suddenly starts to claim that हम भी fintech है, हम बहुत ऐसे से कर रहे हैं, but in the past few years एक बहुत ज़्यादा एकदम से boom आया है. We've also seen be it startups like Finja and SadaPay, JazzCash, GCPesa, even NayaPay most recently, a couple of weeks ago, they also secured $13 million. So we're also seeing a lot of funding come in. But again, the question comes down to these organizations are there, and अब थोड़ी सी funding भी आ रही है हमें, where Pakistan started to secure a lot of VC funding from a lot of places as well. But what specific initiatives or what gaps do these startups, these fintech startups specifically need to fill? A lot of them are still focused on e-payments. They're not really targeting financial inclusion. Not a lot of them are targeting financial inclusion for women, which is really need of the hour, and for other marginalized groups. So what role do you think this fintech ecosystem can play, or do they also have certain limitations within which they have to operate? So I'll start with Nadeem. What would be your comments on this? Yeah, no, great question, Michelle. I think there's also a question, I think Abdul Rahim made a note, right, and saying, why do we debate financial inclusion? And, I look, we started thinking about financial wellness. I created a fund in 2014, 2015, right? And said, famously kind of said, look, financial inclusion is a passe, it doesn't really work anymore. No one has access to a bad bank account, right? So what's the financial wellness mean? And a lot of people talk about it and throw their words around, but there's some deep stuff. There's a lot of research we've done, a lot of models we've built, right? So at the end of the day, financial wellness means that you have to have control of your day-to-day finances, meaning that you have to have efficient payment system, right? Then people have needs, right? And needs means that they want to be able to get productive lending to really grow the businesses, right? So it's one thing consumer lending, one is productive lending. Like I am a Kiryana store, I need to buy my inventory, give me some lending for that. That's a short-term loan, very quick, that I can do it in a trusted way, and it helps me increase my revenue. So I'm happy to pay for it, right? Similarly, in other sectors and so on, freelance sectors, farming sectors, SME sectors, all that stuff is the same thing, right? E-commerce, there's a huge demand. Dusra hai ke, I have to have ability to absorb the shock, right? Most households don't have health insurance, basic health insurance. And there's a moral responsibility to look after not only yourself, but your household worker. तो अगर किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो उसमें आपको 50,000 लाख आपने कैश उसे निकालना है, how are you going to manage that, right? So that shock also gets in the way, right? And that gets worse even for upper middle class families is hard, but when you get lower middle class family, local working class, it's really horrible, right? उसके बाद आपको पास एक आप फ्रीडम चाहिए आपको कि कोई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप. अगर आपके पास चॉइस ही है कि आपने स्टॉक मार्केट में डालने हैं या रियल एस्टेट में आपने डीएचए में घर ले सकते हैं, but that doesn't work, right? So this is what what's happening is the creation of those products has to happen. Financial wellness is thought about in a much bigger context than just a bank account. Bank account doesn't work because no one wants a bank account. We all are running away from bank accounts, right? All I want is an efficient way to move my money, to pay someone, right? Hopefully the things like RAS and stuff create a frictionless thing, but RAS is one element. There's lots of other people trying to do the same, right? But so the money to be made is not on the payment rails. Globally, is not happening on the payment rails, right? So हमारे यहाँ वो एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि जी हर बंदे ने पैसे कमाने हैं, हर डिपार्टमेंट में पैसे कमाने हैं, तो वो कहते हैं जी अगर एटीएम से फीस में कमानी है, अगर मैंने कोई कैश इन डाला वो भी पैसे कमाऊंगा, कैश से कमाऊंगा, so that doesn't work. You have to have the frictionless payment system, right? Which a lot of people are trying to do now. So then you can offer the right products, which is lending, insurance, and so on. Also, just about बात कर रहे थे कि Sharia compliance की, right? I think this important aspect. It's not like I'm saying it's not important. मगर यहाँ पे हमारे कितने banks हैं बहुत successful हैं, right? So there are some Sharia compliant banks. There's also regular banks. So this idea that people are not willing to take products, that's not correct, right? People are willing to take all kinds of products. The more Sharia compliant we make it, great. That meets the culture norms of the country, great. But that's not necessarily the issue. The issue is we don't have the right products. So this is where I think we need to develop
and continue to develop. And there's a lot of good work going on, really a lot of talented people starting to think about this. And also, there's nothing here, there's nothing wrong with copying others, right? And you do it, but you have to do it quickly, right? And do sharply. So there are a lot of models out there around the world that we are now seeing that we can bring in, replicate quickly and create this. So it's an opportunity to leapfrog as opposed to following the same trajectory, right? So this is where we are, I think. Right. Yeah, definitely. Thank you. Zishan, what are your thoughts on this? Basically, what we are talking about is it's fintech as an embedded finance. It's basically what the problem right now is कि अभी जो fintech है as a standalone product हम present कर रहे हैं, and if unless it is not part and parcel of the on top of every service people do, it is not going to be जो हम एक leapfrog expect कर रहे हैं वो नहीं होगा. So embedded finance is one thing, but how to get there? अब जो lending की बात हो रही है, banks do not lend money to people who really need money. अगर आप नॉन अनबैंक्ड या अनडॉक्यूमेंटेड लेंडिंग स्पेस में देखें तो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 300 बिलियन रुपीस मार्केट अवेलेबल जहां पे लोग जाके अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरमा वाला एंड नईम इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज वी ऑपरेट इन BNPL space, so we have very closely watch out, and people go there because they don't have cash flow management, but they have cash management issue that they don't have money at that point of time, but they can pay in intervals, in installments. So how to make that happen? Banks are very reluctant on that. As Badr said, less than 1%, only 1.6 million credit card exist in Pakistan. At the same time, hardly 4-5% debit card exist, and उसमें भी कितने लोगों के पास अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं कि वो उसको recurring payments के ऊपर रिस्क ले सकें कि बैंक एवरी मंथ उसमें से डिडक्ट करता रहे. समटाइम इफ यूर नॉट तो आपकी CIP हिस्ट्री खराब हो जाती है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज बेसिकली, जिस तरह बात मैंने की कि तस्दीक, वी नीड टू मेक इंटीग्रेशंस एंड काइंड ऑफ एक ऐसा रिपोजिटरी जो कि KYC को ज्यादा सहल बनाए लोगों के लिए, ताकि उनका एक क्रेडिट स्कोर जो कि अब एक फर्स्ट लेवल एग्जीक्यूटिव है जिसके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, नो बैंक विल लेंड मनी टू देम. But if you go to Europe, आपको Klarna, Scala, Zestpay, India में there are 21 BNPL fintechs right now. Out of them, last 3 years में 7 has become 1 billion unicorn. How they do that? Because they're taking risk and they're trying to make that enabling environment where they are taking risk. अब यहाँ पे मसला ये कि एक orthodox thinking है. Banks are very orthodox, and at the same time investors are very orthodox also, because they think buy now pay later, they think buy now pay never. So there has to be some kind of balance जहाँ पे हम लोगों को अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो देयर हैज टू बी सर्टेन, जिस तरह मैंने ये डेटा चेक की बात की या तस्दीक की बात की, सो देयर इट्स बिन SPP बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है इसके ऊपर, बिकॉज दे हैव रास्त अवेलेबल हो गया है. बट एट द सेम टाइम अगर हम ये समझें कि ये ओवरनाइट हो जाएगा, इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल. इट विल टेक सम टाइम. एट द सेम टाइम आई थिंक स्टार्टअप्स को भी बहुत ज़्यादा एक हीट फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज मार्केट इज देयर, बट इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कीपिंग इन व्यू ओवरऑल मार्केट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वो समझते हैं कि शायद जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इतना सॉलिड नहीं है कि आप स्पेसिफिकली BNPL फिनटेक को उस बूम के ऊपर लेके जाएं जिस तरह इंडिया में या बांग्लादेश में या यूरोप में काम हो रहा है. सो आई थिंक कुछ काम करने की इसके ऊपर ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज बैंक्स विल नेवर बी एबल टू डू दैट. Because banks का एक अपना एक orthodox system है, and they have never been able to do that, and they will not be able to do that. I think startups can do that. They have that kind of capacity and capability कि जहाँ पे वो लोगों को ऐसी products दे सकें. नदीम साहब कहते हैं कि products are poor. Yes, I do agree. मगर अब जो एक infrastructure first level available हो गया है, उसकी बेसिस के ऊपर भी बिलीव कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बतदरीज बेहतरी आती चली जाएगी. बट कुछ चीज़ों के ऊपर आई थिंक गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि जो ये एक अनडॉक्यूमेंटेड लेंडिंग है, उन लोगों को कैसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा बनाते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिट चैलेंज, और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. Absolutely. So this is reminding me of an example of what a Fuat is doing, right? So on a much smaller scale, of course, but now we also see कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोलैबोरेट कर लिया है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है. They're trying to give those interest-free loans to those very, and who the average loan size I think is around 22,000 rupees, right? Which सोचने में कुछ भी नहीं लगता, but the amount of people that they've helped through it, around 4 million families, is still a lot. So
Whether coming to you on this, do you think is tarah ki, even the non-profit sector can play a certain role in this, or it is, and the government is working with them? But to scale this up again, do you still think if fintechs can play a major role in this, or is they also have those limitations? जिसके beyond वो नहीं exceed कर सकते? What does your experience say? मेरा मिशल इस पे एक तो आई थिंक जो ज़ीशान ने बड़ी अच्छी बात की was the embedded finance या embedded fintech वाला part. आई थिंक अभी तक जो यूज केसेस हैं वो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं कि प्लीज मेरे से अकाउंट खोल लें या प्लीज आप एबीसी ऐप डाउनलोड करें और उसमें अकाउंट खोलें तो वो आपको डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाएंगे. बट वो डिस्काउंट इकोनॉमी का मसला है कि आई मीन द लाइफ साइकिल इज शॉर्ट. आप 3 महीने 6 महीने के बाद यू हैव टू वो खत्म हो जाता है, आप ऐप का यूजेज बंद कर देते हैं. मगर अगर आप जेन्युइन यूज केसेस जो पब्लिक एट लार्ज के हैं अगर उनमें एम्बेड कर देंगे फिनटेक को, चाहे वो एग्री टेक है, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो जो भी है. एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ. कोविड में स्कूल फी बैंक काउंटर पे जाके पे नहीं हो रही थी पेरेंट्स से बिकॉज सब कुछ बंद था और स्कूल्स ने फीस कलेक्ट करनी थी. मगर देयर इज अब तो 1 या 2 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आपको इनवॉइस बेस्ड बिलिंग ऑप्शन दे रहे हैं. बट फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली के एक ही स्कूल में 3 बच्चे हैं और उन्होंने तीनों की फीस जमा करा दी है तो स्कूल के लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था ये फीस किस बच्चे की आई है, कौन पेरेंट है, कौन स्टूडेंट है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो इतने सारे यूज केसेस हैं जहां फिनटेक अगर एम्बेड हो जाएगी नेटिवली और वो सीमलेसली आपको एक्सपीरियंस दे सकेगी तो ऑटोमेटिकली अडॉप्शन बढ़ जाएगी. मगर अभी तक इवन इन केस ऑफ ई कॉमर्स आज तक कोई ऐसा पेमेंट गेटवे पाकिस्तान में नहीं है जो आपको 3 महीने ना लगाए एक्सेस देने में. मतलब लिटरली आप अभी जाएं tocheckout.com पे, उनका नाम पाकिस्तान में लीगल एंटिटी है, ना स्टेट बैंक का लाइसेंस है, ना उनके पास कुछ है. आप अभी अप्लाई करें 48 आवर्स में आपका पेमेंट गेटवे अप्रूव होगा, एक्सेस आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, एपीआई के एक्सेस मिलेगा, आप वेबसाइट पे इंटीग्रेट करेंगे और विद इन 72 आवर्स यू कैन स्टार्ट सेलिंग. पाकिस्तान में आप किसी बैंक में या किसी भी पेमेंट गेटवे अप्लाई करेंगे, वो कहेंगे 10 डॉक्यूमेंट पहले भेजें, फिर आप आएं हमारे अकाउंट मैनेजर से मिलें, फिर वो 10 बातें करेंगे और फिर भी उसमें सारे यूज के सॉल्व नहीं होंगे. टू चेकआउट पे मैं आज दुनिया से पेपैल की पेमेंट भी पाकिस्तान में रिसीव करता हूँ, इवन व्हेन पेपैल डज नॉट ऑपरेट इन पाकिस्तान. अब पाकिस्तानी कोई भी पेमेंट गेटवे ये फैसिलिटी नहीं दे रहा. फिर उसकी कंप्लायंस के जो इश्यूज हैं, एक तो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है कंप्लायंस की, केवाईसी वगैरह की, बट उसके अलावा जो बैंक्स की अपनी सिक्योरिटी कंप्लायंस है वो उससे भी नेक्स्ट लेवल है कि वो क्या कर रहे हैं. इसी तरह फ्रीलांसर्स की बात की नदीम साहब ने. अब फ्रीलांसिंग हमारी ग्रो की है. पेमेंट गेटवे कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? इट्स अ फॉरेन पेमेंट गेटवे एवरीवन इज यूजिंग, पेयोनियर. क्यों यूज हो रहा है? आई गॉट माई फर्स्ट पेयोनियर कार्ड एज अ फ्रीलांसर बैक इन 2002. मैंने तब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो मुझे उन्होंने इंटरेस्टिंगली बैंक्स ने कहा, आई डोंट नो टेक द नेम, बैंक ने कहा जी आपका दफ्तर किधर है? मेरा दफ्तर घर में है. उन्होंने कहा फिर घर में मेज कुर्सी है दफ्तर वाली? दिस वाज अ कन्वर्सेशन. मैंने कहा जी वो वाली नहीं है. उन्होंने कहा फिर तो हम आके जब आएंगे चेक करने तो हम तो आपको क्रेडिट कार्ड ही नहीं इशू कर सकते बिकॉज आपका दफ्तर ही नहीं है. आप कह रहे मैं काम करता हूँ. एंड दिस हैपेंड टू मी व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर गूगल. मैंने कहा मुझे बताएं गूगल से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आई विल जस्ट गेट यू दैट डॉक्यूमेंट. वी कांट. सो आई टू कॉल एंड यूज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड कॉल अ प्रेसिडेंट ऑफ अ बैंक कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, मैं गूगल में काम करता हूँ. तो उन्होंने एक्सेप्शन दिलवा के मुझे करवाया. बट ये आज भी ट्रू है, ये आज भी ट्रू है. फिर बाय द वे जो ज़ीशान ने बात की केवाईसी, ज़ीशान हमने एज पाशा we have already raised this that we need to have a centralized KYC. The proposal is right now with the PM office and the State Bank has in principle kind of understood the logic कि centralized KYC जरूरी है कि आप एक ही बैंक में दूसरा अकाउंट खोलने जाए तो KYC दोबारा शुरू कर देते हैं. तो मल्टीपल बैंक्स में आप स्विच या फिनटेक्स में स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकें, इट शुड बी ईजियर. इसी तरह और फिर वो क्रेडिट स्कोरिंग मेंटेन करना भी आसान हो जाएगी और सारा. बट द चैलेंज राइट नाउ इज के इवन विद फिनटेक्स इन प्लेस हमें रेगुलेशन को बहुत फर्दर ईज अप करना है, बहुत ज्यादा. वी आर फार बिहाइंड देयर. नंबर 1. नंबर 2, ना सिर्फ वन टाइम ईज अप करना, इट्स नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज, इट्स अ रोलिंग थिंग. रोज एक नई इनोवेशन हो रही है. अभी हम लोग समझना शुरू हो रहे थे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो क्या होता है तो एनएफटी लैंड कर गया. अभी वो समझना शुरू कर रहे हैं तो हम डीओएस और थिंग्स आर चेंजिंग सो रैपिडली कि हमारे रेगुलेटर्स को भी अपनी पेस पे उसी पेस पे चेंज होना है. ब्लॉकिंग एनीथिंग और सेइंग कि ये नहीं हो सकता इज समथिंग विच, या हर चीज में FATF का ले आना इज नॉट द सोल्यूशन. अगर आज दुबई और बहरीन ने बाइनेंस को लाइसेंस दे दिया ऑफिशियली तो देयर इज समथिंग विच वी आर मिसिंग आउट ऑन.
and we have the opportunity to leverage and leapfrog to that next level अगर हम बीच में कुछ miss भी कर गए. So I think the regulator really needs to catch up much faster. और I mean with all due respect मैं स्टेट बैंक से बहुत closely काम करता हूँ. Even the lingo there is not for an average user. Even as a businessman, जाके स्टेट बैंक की language समझना कि उनके कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन सा क्या करता है, मैंने कौन सी कंप्लेंट किसको रेज करनी है, is a challenge, and we have already raised it. State Bank की website is probably from the 1990s, needs a super revamp. It's not even properly mobile friendly. So यही, and that trickles down to the licensed banks as well. Banks की priority consumer नहीं है, banks की priority उनके government loans हैं, उनकी treasury है, उनकी priority consumer तो नहीं है, वो एक उन्होंने front end है उनका शायद. And that reflects जब आप credit card पे, लोग क्यों नहीं commerce पे use करते credit card? It's not because of the पेमेंट पहली दफा नहीं जाएगी. The challenge is कि पेमेंट ना गई और कैंसिलेशन या रिटर्न करना पड़ा, तो फिर 2 महीने का प्रोसेस है और 10 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और 25 दफा फॉलो अप करना पड़ेगा. एंड दैट्स द चैलेंज कि जो फ्रिक्शन की बात कर रहे थे नदीम साहब, हर प्रोसेस में इतनी फ्रिक्शन है, नॉट जस्ट अ सिंपल पेमेंट प्रोसेस बट इवन द रिटर्न ऑफ द पेमेंट एंड द कैंसिलेशंस एंड ऑल ऑफ दोस इज सच अ चैलेंज कि आप people do not want to, and hence cash is easier to transact, is cheaper to transact. तो वो कहते हैं why not then continue with what we are already used to. तो अगर आप चाहते हैं कि behavioral change आए, तो फिर आपको उसको कैश से ज्यादा इफेक्टिव भी बनाना है, एफिशिएंट भी बनाना है, चीपर भी बनाना है, तो फिर लोग सोचेंगे कि हम शायद ट्राई करें, इसमें बेनिफिट्स हैं. बट अगर हम कैश से एक्सपेंसिव रहेंगे तो इवेंचुअली इकोनॉमी विल नॉट माइग्रेट अनलेस, और आप देख लें उनको जहां नजर आ रहा है बेनिफिट, वो क्रिप्टो पे हम सबसे ज्यादा हैं, दुनिया में टॉप 3 में होंगे प्रोबेबली, क्योंकि उनको वहां कोई बेनिफिट नजर आ रहा है, एंड दे आर बाईपासिंग द रेगुलर सिस्टम फॉर दैट अनफॉर्चुनेटली. So I think we need to really catch up faster, both in regulations and in terms of actual execution by the private entities as well, whether they're fintechs or the banks. But I totally agree to Zishan's narrative. I don't think banks can change or they can improve. I think it's a fintech which will bring about that change. So if I could just, sorry, Michelle, is this I can comment on, because I agree with everything you said. आप जो बात करें ना about credit cards or the process and so on, to me those are poor product designs, right? There's nothing in the state bank regulation which says you have to have poor product. 100% agreed. So just checkout जैसे आया है, so checkout is a simple gateway, right? So there's no reason that Alpha or at the end of the gateway, I shouldn't mention Alpha, they're friends. It's like any other gateway could be the same, right? So by the way, आपने नाम ले लिया, तो Alpha is probably the most progressive. Sorry for the interruption. Probably. So I shouldn't have used that name, but it's like so this is simple thing, right? अब जब हमने Jumo शुरू किया था, I was one of the investors in Jumo at the early stages. So everyone's familiar with Jumo, पाकिस्तान में आए थे. So what we realized is कि उधर भी इशू था ना कि बैंक चल रहे हैं ग्लोबली, इट्स नॉट लाइक द पाकिस्तान के बैंक से इस तरह कि ग्लोबली बैंक इस तरह, इसलिए फिनटेक की बूम आई है ना. तो उसमें जब हमने देखना शुरू किया था तो लॉट ऑफ पीपल वांट कि जी आपके दफ्तर का टेबल है नहीं है, आपके कितने घर कहाँ है, आपकी गली कौन सी है, उसमें आपकी साइकिल क्या है. So what we realize is actually there's more data, reliable data, which is what Afur did too, which is based on कि जो आप मोबाइल फोन करते हैं, आप टॉप अप किस वक्त करते हैं, आप कितने अमाउंट का टॉप अप करते हैं, किस वक्त टॉप अप करते हैं, that has more credibility in terms of your ability to repay than anything else, right? So that was a basic analytic change. So this is what we are doing, right? We don't have to rely on all this infrastructure we built. I think there's an opportunity for us to bypass some of this stuff and ignore some of this stuff and say, okay, we can do this, which is what a lot of people are starting to do. But I agree with you, there's a lot of work to be done, but it's still, I think, moving in a good, pace direction. Sorry, एक चीज मैं ऐड कर दूं. Sorry, Zishan, just wanted to add. By the way, in COVID and all this time, State Bank has improved many fold. Many fold. मतलब the way they have started interacting with the industry and everything. Sorry, Zishan, just wanted to highlight कि अगर मैंने बात की स्टेट बैंक के डिजिटल एसेट्स के रो, but even then I think they've improved significantly, and I really appreciate कि मतलब मैंने खुद 3 उनसे चेंजेस करवाई हैं स्टेट बैंक रेगुलेशन में, FE मैनुअल में, and I was impressed कि कैसे उन्होंने काम किया इस पर. Sorry, Zishan. नहीं जी बिल्कुल, बदर आप ठीक कह रहे हैं. दैट इज व्हाट आई सेड कि इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड और बहुत इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, बहुत इनकरेजमेंट है. बट जो नदीम साहब बात कर रहे थे और मिशेल ने भी बात की अखुवत के ऊपर कि बेसिकली लेंडिंग का एक सोशल कॉन्टेक्स्ट भी है जिसको हम टोटली मिस आउट करते हैं.
अखुवत और बाकी काफ़ी सारे इदारों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, एंड व्हाट एज एन एक्सटेंड वी आर वर्किंग कि हम एक एक्सटेंड यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज लेस देन 35, so it means all Gen Zs and millennials, and they are very kind of conscious about their self esteem. तो जिस तरह एक लिंक्डइन का 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल होता है, इसी तरह आई थिंक देयर हैज टू बी अ यूनिवर्स जहाँ पे एक सोशल कॉन्टेक्स्ट भी इन्वॉल्व हो कि जब आप लैंड कर रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग अ यूनिवर्स, तो वहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट आई थिंक कि वहाँ पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अखुवत आप देखिए तो वो जो उनके मैनेजमेंट है वो कहते हैं कि हमारे ज़्यादा लोन्स खवातीन को दिए जाते हैं, और वो 99.9% जो है वो उनका जो है वो रिकवरी रेट है, एंड दे ऑलवेज सेज अमजद साहब के दे ऑलवेज पे ऑन टाइम, बिकॉज वो एक सेल्फ एस्टीम इशू है, एंड अदरवाइज वो एक इंक्लूजन तो हो गया, मगर आई थिंक सोशल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो शायद बैंक्स अपने रॉबस्ट और ऑर्थोडॉक्स सिस्टम अप्रोच की वजह से उसको बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और वो उनको कुर्सी और मेज़ चाहिए। तो आई थिंक फिनटेक्स जो हैं वो अगर इस अप्रोच के साथ काम करेंगे कि ये अगर एक यूनिवर्स बन सके जहाँ पे एक रिपोजिटरी है KYC का, वो बहुत आसान हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस आप चेक पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर एक सोशल कॉन्टेक्स्ट भी है कि एक बंदा, जिस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम जाते हैं, वी आर इनटू 250 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां पे अगर 10 लोग आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो 10 के 10 किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और वो आगे आपको फिर रेफरेंस दे रहे हैं। सो आई थिंक दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड अ रिपल इफेक्ट इन ऑर्डर टू इंक्लूड मोर एंड मोर पीपल टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। Totally agree. जी, absolutely. And I think just with given Hoover's context, I think the thing that works is that they're really, वो hierarchy exist नहीं करती। जब आप जाके वो एक borrower से बात करते हैं तो वो उन्हीं के लेवल पे बात करते हैं, जो लोग उनको लोन दे रहे हैं। वो एक सिस्टम, गारंटर सिस्टम होता है एक उनका, where a group of 5 people get the loan together and then they have to return it together. So without adding too much paperwork to the system, they've naturally created a system of accountability. Badr, you want to say something? जी सॉरी, एक तो अभी तक जो हम बात करें ना कंज्यूमर वाली साइड है, आई थिंक देयर इज अ न्यू स्पेस जो बहुत जल्दी इवॉल्व कर रही है, व्हिच इज द होलसेल टू रिटेल वाली मार्केट है, जिसमें आप देखें जितने उसमें B2B ई कॉमर्स में जो नए स्टार्टअप्स रिसेंटली, जैसे आपने देखा बाजार ने $70 मिलियन पर्सन रेज किए, ये जितने बाजार, ताजिर, सेल्स फ्लो, जुगनू, रिटेलू वगैरह, दे व्हाट दे आर, और डिजी खाता, और what they are helping with is जो भी नदीम साहब हाईलाइट कर रहे थे, यूज केसेस वाली बात और फ्रिक्शनलेस, उन्होंने इतनी सिंपल एप्स बनानी शुरू कर दी और उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वो आसान कर दी है एक करियाना स्टोर की, कि उसके अब उसकी हिस्ट्री मेंटेन होनी शुरू हो गई है। जब हिस्ट्री मेंटेन हो रही है तो उसकी बेसिस पे, डेटा एनालिटिक्स की बेसिस पे दे कैन स्टार्ट लेंडिंग, माइक्रो लेंडिंग करके उसका बिजनेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, और मतलब दे आर नाउ ग्रोइंग टू मिलियंस। सो आई मीन द फिनटेक पार्ट उसका, आई थिंक the roots are now taking place, जिसके स्टेम हमें नजर आते जरा टाइम लगेगा, बिकॉज जाहिर है पहले वो डेटा आएगा इतना कि हम उस पर एनालिटिक्स करें, और मगर उस पर लैंडिंग शुरू हो चुकी है। तो इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स बिजनेसेस विल इवेंचुअली इवॉल्व इनटू फिनटेक एज वेल, या कोई भी जो टेक बिजनेस है, बिकॉज इवेंचुअली इट विल इन्वॉल्व फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, और जब ट्रांजेक्शंस आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली लैंडिंग की तरफ भी जाएंगी। तो कंज्यूमर साइड पे लैंडिंग BNPL साइड पे आ रही है, जो अभी ज़ीशान बात कर रहे थे, जो मर्चेंट वाली साइड है उस तरफ भी लैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी ताकि बिजनेस ग्रो हो सके। आई थिंक बोथ साइड, सो एक कंज्यूमर वाली बिल्कुल एंड ऑफ फिनटेक है, एक B2B वाली साइड पे आई थिंक व्हिच इज आल्सो इवॉल्विंग दैट। जस्ट वांटेड टू highlight that as well. So I also just want to raise one last question, and then we move on to taking questions from the audience. And I was just thinking, what would be one key takeaway which each one of you would give to those aspiring entrepreneurs or fintech startups? I think we have a handful of them in the audience. Okay, what is the next step that they should be taking? We've identified a plethora of problems. ये भी है, ये भी है, ये भी है. कर हम बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीजें सकते हैं, but we need to take it one step at a time. So what would be, based on your experience, based on what you've seen in the market, based on your own organization and what they've been doing, what would you suggest to those entrepreneurs? So Nadeem, I'll start with you. Sure. Look, having invested in 80 plus companies over lifetime, and run multiple companies and so on, and engaged now, we are, by the way, we are building a embedded finance platform in Pakistan. That's what Neem Exponential is. Even though it may not feel this way, the easiest thing to do is raise money, right? In a market like Pakistan.
because there's such a demand. It's the easiest thing to do. So when people start, throwing out these numbers, 30 million ho gaya, 70 million ho gaya, that's the easiest thing to do, right? Where we've seen, and time after time, like every market I've been into, right? 0 to 1 is easy. 1 to 10 is hard, and most people don't make it, right? So when I start looking at this stuff and saying, fintech is like, word, right? And so I always say tech is to be taken for granted. If you don't have the tech, don't show up, right? That's the whole point of fintech, right? But tech just gets you the entry point. The fin part is the important part, which is the business side, right? And the business side means that it has to make money. It has to be something that has the right structure with people. There has to have customers, that people are willing to pay revenue for it, and over time you become sustainable, because otherwise it doesn't work, right? So a lot of people lose sight of that and say, there's a growth thing would happen magically and so on, right? So it's kind of like, that's the important part. So that means that the customer acquisition cost has to be low. That means there has to be a lifetime value. That means they have to be able to scale, right? So, there's a statement in, which a lot of venture capital people use and says, whatever people raise, doesn't matter if you raise $1 or $1 million or $100 million, the company will spend it in 18 months. जो $100 million वाले raise करते हैं, जो $10 million, you see it already in our ecosystem. Suddenly they have nice offices. Suddenly they're talking about expanding into 6 countries. Abhi Pakistan business शुरू नहीं हुआ, they're like 6 countries. They've hired everyone. Everyone is a great salary. Everyone's just driving a car, and so it doesn't work that way. That kind of is a flashy side of business. So this is a marathon, right? The great businesses, all these businesses we talk about, right? It all have taken a long time to build, right? And they have gone through a lot of issues where they had, Amazon ki history padhe, Apple ki history padhe, they almost died many times over, right? And so survived because they had to graft through that. So that's what it takes. So it is a journey, which is a marathon, takes a lot of hard work, and you have to focus on the fundamentals of the business. Super important. Absolutely. Badr, what are your thoughts? Bakul, I think with these सब's experience, I think I totally agree. I think मैं तो वैसे भी startups को बहुत ज़्यादा दफा बताता हूँ जो बहुत अभी idea भी सोच रहे होते हैं, तो पहले VC को ढूंढ रहे होते हैं. तो मैं उनको कहता हूँ कि सबसे पहले important चीज तो है कि कुछ देर bootstrap तो करो, कुछ दिखाओ तो सही, को proof of concept तो करो, validate तो करो. क्योंकि एक और बात ये कि अभी नदीम साहब ने बताया, पैसे लेने तो आसान है, वो शायद लेने चलो कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी हो, मगर उसका रिटर्न लाना आसान नहीं है. वो जो मैराथन है वो बड़ी इट्स अ वेरी टफ जर्नी, स्पेशली इन पाकिस्तान. क्योंकि अभी याद रखें, आप जब पाकिस्तान में कंपनी रन करते हैं तो आपको कुछ 32-30 पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से आके पूछने में 10 सवाल. किसी ने कहना है अपना अटेंडेंस का रजिस्टर दिखाएं, किसी ने आपको नोटिस भेजनी है, किसी ने कहना है जी वो प्रोफेशनल टैक्स भी है, किसी ने आगे कहना है जी वो जनरेटर अनयूज्ड जो पड़ा हुआ है उसका भी एक टैक्स है. तो वो 10 और चीजें भी आपको अकाउंट फॉर करनी है, जो कि जनरली आपकी एक्सेल की बिजनेस प्लान में नहीं हुई होती हैं. तो वो एक्सेल में यू कैन रियली फिट दैट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान. तो आई थिंक स्टार्ट करना और फिर सर्वाइव करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी स्टार्टअप के लिए चैलेंज है. हाउएवर I think the most important thing from fintech perspective है, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तो ग्राउंड रियलिटी थी, बट एक इसका मैक्रो लेवल इशू भी है. जब आप कंप्लायंस की बात, जहाँ रेगुलेटर आ जाता है जिन इंडस्ट्रीज में, वहाँ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना सिर्फ एग्जीक्यूशन देख रहे हो, बल्कि रेगुलेटर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो और रेगुलेटर को फीडबैक दे रहे हो. और अगर वहाँ आपको एडवोकेसी या लॉबिंग करने की जरूरत है तो वो आपको पता हो कैसे करनी है और किन चैनल से करनी है और क्या आप उतनी देर सर्वाइव कर पाएंगे. I was with a payment gateway yesterday, जिनको 4 साल लगे कि अपने ट्रायल के लाइसेंस को एक्चुअल लाइसेंस में कन्वर्ट करना है. 4 years. So had they not gotten an investor जो कि उनको इतनी देर स्टेबली रख सकता ऑन अबव वाटर, तो वो सर्वाइव ही ना कर पाते. 4 साल के लिए लाइसेंस का ट्रायल इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इसलिए आई थिंक ना सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज को देखें बल्कि अपने मैक्रो फैक्टर्स को भी देखें. और अगर आपको वहाँ पॉलिसी एडवोकेसी वगैरह करने की जरूरत है तो यू शुड नो दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल कि वो कैसे आपने हैंडल करना है. बट टोटली 200% एग्री ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एंड द फंडामेंटल्स इन प्लेस कि बॉटम लाइन का आपको पता हो कि मैं कितना दूर हूँ, और लाइक यू नीड टू नो इट वेरी वेरी क्लियरली. Zishan?
जी बिल्कुल, मैं बदर की बात को आगे बढ़ाऊंगा। 2-3 साल या 4 साल पहले एक हिप फ्रेज था कि एवरी कंपनी इज एन ई कॉमर्स कंपनी। और ई कॉमर्स से लोग ये समझते थे कि वेबसाइट बना लिया तो बस अब हम ई कॉमर्स हो गए। देयर इज नो इकोसिस्टम, वो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो अब हम नया जो हिप फ्रेज है वो कि एवरी ई कॉमर्स कस्टमर इज अ फिनटेक कस्टमर। तो जो बात नदीम साहब ने की कि जो टेक है वो बड़ा ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई फाइनेंशियल सर्विसेज का कोई सोल्यूशन अवेलेबल है और वो टेक बिल्कुल पैथेटिक है, तो दैट इज़ नॉट फिनटेक। तो आई थिंक द आइडिया हैज़ टू बी के वो प्रोडक्ट, जिस तरह उन्होंने कहा कि पुअर प्रोडक्ट्स हैं या उनको उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसमें ऑफ कोर्स रेगुलेटर का बहुत ज़्यादा दखल है। और रेगुलेटर के साथ बात करना लोगों को नहीं आता। एक्चुअली पीपल आर वेरी इंटिमिडेटेड बाय रेगुलेटर। तो इसको मेरे ख्याल में जो इनेबलिंग बॉडीज हैं, पाशा है या पीएसईबी है, इनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट साइड से भी जो है वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। दूसरे जो बात है वो ये कि इंटीग्रेशन, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अब जिस तरह डिजी खाता है या अब माई टी एम है, सो दे आर ऑन नैनो लैंडिंग साइड। और वो कुछ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जो किराना स्टोर्स हैं उनको उन्होंने डिजिटाइज कर दिया। अब वो एक रिपॉजिटरी बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बाजार, जिस तरह बदर ने कहा कि जीशान की बात रेगुलेटर को अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने कहा इसका कनेक्शन ही जरा थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, we're unable to hear you. जी। Okay. Can you hear me now? Sorry, I think there's some problem with the internet. Is it okay? जी। अच्छा, तो अब जिस तरह अब डिजी खाता है, तो ये बेसिकली एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन यूजर बेस एंड कस्टमर बेस। अब उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है, और वो जो एम्बेडेड फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे कि स्टार्टअप आपस में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट यू हैव टू थिंक इन ऑर्डर टू मेक योर प्रोडक्ट मोर वायबल एंड मोर कंपैटिटिव एडवांटेज आप कैसे लेके आ सकते हैं। स्टैंड अलोन अगर आप सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे, यस इट इज गोइंग टू गिव यू सम ROI on short term, but long term sustainability के लिए I think you need to create that ecosystem with others also, जहाँ पे affiliations और associations create हो और customer को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो this is I would say जी। Absolutely. Well noted. Okay, so we have one question from the audience. I don't know, panelists, if you can see this. So Abu Bakr Mohammadi ne share kiya hai कि I'm running a Sharia compliant takafful aggregator, hifaza.com, but distribution digitally is not possible due to lack of awareness or trust. Putting in place a street sales force does not justify the distribution cost apart from life insurance, where commissions are 40%. I have developed products with insurers that cater to the masses and are priced between 0 to 10,000. So do you think this can be catered to? इस पे मैं सिर्फ जी सॉरी एक चीज ऐड करना चाहूंगा मिशाल एंड अबू बकर साहब। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जिसने अभी बात की कि टेक्नोलॉजी वाली नदीम साहब ने, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी मेरे हिसाब से कोई स्टार्टअप हो और एंड इफ यू 100 रुपीज 80% हैज टू गो टू मार्केटिंग, 20% से ज्यादा टेक पे नहीं लगना चाहिए। द चैलेंज इज मोस्ट ऑफ द कंपनीज और स्टार्टअप स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर मनी in developing a perfect tech, which is not necessary. You need to have an MVP and go to market quickly and spend most of it money in marketing and outreach. तो जो आपने बात की ना कि distribution digitally is not possible, actually असल गेम ही हुआ है। I think product तो बनाना है important, but असल game is outreach and knowing your segment और फिर वहां तक जाना। I think so that's critically important कि आपकी marketing जो है या outreach वो आपको फंड करने की जरूरत है। Just my side of the perspective to that. जी बदर ने जिस तरह कहा कि एक्चुअली मोबाइल कंपनीज ने काफ़ी कोशिश किया, इसमें यू फोन हैज़ अ प्रोडक्ट कि वो 2 रुपए 3 रुपए की इंश्योरेंस भी देने की कोशिश करते थे डेली बेसिस के ऊपर। बट आई थिंक वो जो ट्रस्ट का एक डेफिसिट है कि शरिया कंप्लाइंट नॉन शरिया कंप्लाइंट, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एक आई थिंक वो लोग जो हैं उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उस इंश्योरेंस को अभी भी वो ये समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉन इस्लामिक है। इसके ऊपर आई थिंक एक सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी बिकॉज एक माइंडसेट इशू है और माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। आप देखेंगे कि हम जब मोबाइल फोन्स के उसमें काम करते थे तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक कैंपेन चलाया कि जी आपको स्मगल्ड फोन नहीं लेने चाहिए हैं क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएंगे। और डब्स का जब सिस्टम आया तो वो जब एक एक सब लोग मिलके उसके ऊपर काम करते हैं फिर होता है। अदरवाइज आई थिंक इट्स गोना बी स्टैंड अलोन। अगर आप इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे इट्स गोना बी अ वेरी अपहिल टास्क। इतना आसान नहीं है ये।
Yeah, great. I'm not sure. Okay, that right? Look, there's lots of nice businesses. One of the really awesome businesses in insurance mein hai, Numan Bashir is building a business called Ozone Digital. I am such a huge fan, right? And so they are figuring this out. They're figuring out the access. 16 insurance companies and now 18 actually. They have got the brokerage license. One of the quietest businesses, no headlines, nothing, and they are one of the most awesome insurance businesses, really transforming insurance industry, right? Digikata, what Adnan has done as an example. I mean, there are lots of people, right? So it's not like I'm naming these people. It's like a business which started solving for simple things, right? So when you product की बात करते हैं, and Zishan, having lived in the telco world of insurance and so on, it's one thing to sell. मगर अगर customer उसको claim नहीं कर सकता या उसको claim करना चाहे तो then it becomes the paperwork and he never gets the money. Then that's not a good product, right? That's a horrible product. So we have to solve for basic experience जो है कि मैं किसको कॉल करूंगा जी कि मुझे प्रोडक्ट मेरी है आपसे ली थी खरीदी थी अब तो मुझे पता ही नहीं मैंने खरीदी थी ये नहीं पता उसके टर्म्स क्या हैं जब मैं क्लेम करता हूँ कहते हैं सॉरी जी आप पेपर भेज दें हेड ऑफिस तो हम आपको बता देंगे 3 महीने में राइट दैट डजंट वर्क सो when we think about these things it's like अक्सर मैं बात करता हूँ कि sometimes you think that the app business is all sexy right it's kind of like has to be glamorous M-Pesa started the business is most of the business for longest time was built on a USSD platform, right? There was no app. They became millions of customers and all forms of startup use this thing, right? So हम लोग समझते हैं कि DigiKhata is very simple business, right? They started creating very simple bookkeeping stuff उसने आगे grow किया, right? And their businesses like that. Lots of examples. So, but we have to solve for product is not just the product. Product is the whole experience of service delivery of experience. Vishal, we haven't really talked about because when you get 3 men, you don't talk about women inclusion, right? Because this is important. But the problem with we are spending a lot of time. My co-founder Vladimira, she spent a lot of time on this thing, and we spend a lot of time because there's so many biases in the product design in the delivery service. That's why women don't use it, right? आप किसी बैंक में या आप कहीं जी आपने वॉलेट टॉप अप करना है किसी बाजार में आप किसी दुकान में चले जाएं वहां पे 6 बंदे खड़े हैं आप जाके टॉप करेंगे नो वुमेन इज गोइंग टू गो देयर राइट that's not because women don't want or they're not literate or don't have smartphones they have all those things if you provide the right product and that's Hoover has proven that to us as an example right so it's just about the design the product design is full end-to-end service की बात करते हैं and simple things are required you don't have to it's not a rocket ship most innovation there's a beautiful book written about this stuff most innovation happens incrementally ये हमारे दिमाग में होता है कि somehow innovation leapfrog it doesn't happen leapfrog right हम e-commerce build किए थे as ईशान ने बात की पहले e-commerce था उसके बाद कोई fintech आया कोई 4G आया all those things incrementally चलती हैं and then catch up right that's why innovation happens so you have to solve for the simple stuff first get that right and then take it from there sorry a long answer Absolutely. No, thank you so much. I want to respect everybody's time. I'm not going to go overboard, but I think we have really talked in depth about what are the problems, more so the problems than the solutions, but we have definitely highlighted that there's a lot of opportunity present for entrepreneurs, for startups, for fintechs, especially really explore this market and develop really consumer-oriented solutions. So with that, I think I'd just like to thank you, Badr, Nadeem, and Zishan for taking out the time and being here. We really appreciate this conversation, and we hope to have several more of these and continue these conversations because I know we can't really try to solve all the problems just in 1 hour. So we'll hopefully get to continue this conversation from here. But thank you so much on behalf of Hatch's team, and we look forward to collaborations. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thanks so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.